Hello guys, welcome to the new issue for the YOJANA magazine, and this issue is all about the healthcare. And I am Shantanu, so let's get straight onto the topic. First of all, I have taken introduction as this. Public health is one of the most important issues regarding India's opportunity to reap the benefit of its demographic dividend. As we know that India is presently holding the highest number of youth population. So to make sure that they are giving enough GDP for us, it is very important that the health wise we remain okay. However, it has remained a sector without significant push towards achieving growth, and India has successfully wiped out diseases like polio, guinea worm disease, yaws maternal and neonatal tetanus, but it is still facing a unique situation of triple burden disease. This is an important phrase mentioned in the YOJANA. So what is triple burden disease? First of all, the three burdens of this is communicable disease, non-communicable disease and injuries. So this is what I have chosen as introduction to the healthcare initiative or the healthcare sector in India in its present condition. Now what are the challenges before the healthcare improvement in India? Okay. Since independence, the focus of public policy in the health sector has been on building and strengthening the public healthcare delivery system. So government is more of a provider since the independence. Okay, in the last decade only, government has introduced new initiatives to strengthen the demand side financing. That means government will purchase the healthcare from the experts of that sector and address the gaps in equity and affordability of the healthcare. Now, these are the following reasons behind the stagnation in the healthcare sector. Number one, inadequate and fragmented healthcare service. Healthcare services have been there, however, they were not adequate to serve the whole country geographically as well as population wise. Whereas it was fragmented also. Fragmented means that there was efforts in this sector like the diseases polio, guinea worm disease. However, there are some sectors which are completely neglected. A huge out of the pocket expenditure to put more burden on the people from the marginal and the poor families. Public expenditure, if we take, is 21% in the healthcare sector, whereas out of pocket expenditure is 62%. So this is a financial burden on the marginal peoples. Okay. Low financial protection, low coverage of health insurance both in rural and urban area, and unregulated private sector and inadequate public spending. तो private sector शुरुआत से ही था, लेकिन these were totally unregulated. That means too much expensive for the marginal and the poor families to incur. Okay. So moving on to the next slide. So here are some statistics regarding the healthcare sector in India. Life expectancy in India has increased from 57.91%, which was in 1990, to 68.65% in 2016. The total fertility rate has reduced sharply from 3.4 in 1992 to 2.2 in 2015-16. So this is very important because this is taking important part in population control, or rather I must say that population growth control. IMR matlab infant mortality rate, this has declined from 88 per 1000 live births in 1992, 34 per live births in 2015. And if we take the MMR, it has declined from 556 per 1 lakh live births in 1992 to 174 per lakh live births in 2015. We are also very close to achieve the under 5 child mortality rate as per the MDG target. Now what is MDGs? Millennium Development Goal. So these are important, and what we need to know is what is life expectancy, how is it defined, what is total fertility rate, what is IMR, MMR and under 5 child mortality rate. So these definitions you must know, and I will cover these things in a different lecture. So let's move on to the next slide. सो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में इंडियन गवर्नमेंट्स और इंडिया का जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं इन 2008, मतलब उससे पहले in the sector of health insurance there was not much significant effort
from the government. So in 2008 there was a scheme named as Rashtriya Swasthya Bima Yojana. This was launched with an annual cover of rupees 30,000 per family at the central level. However, this scheme addressed only the secondary and the tertiary healthcare and not the primary healthcare, and therefore it suffered fragmentation. तो आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि ये हेल्थ सेक्टर का जो 3 लेवल्स है, यानी कि प्राइमरी tier, secondary tier and tertiary tier, what are they? Okay, now there is an important scheme which has recently been launched is आयुष्मान भारत, और इसके अंदर 2 डिविजन है. नंबर 1 इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. दिस विल प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर. तो अभी देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, मतलब फर्स्ट एड जो हम बोलते हैं. आपको कुछ हुआ है तो सबसे पहले जो बेसिक हेल्थ केयर आपको दिया जाएगा, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, दैट इज नोन टू बी प्राइमरी हेल्थ केयर. और उसके बाद जो एक्सपर्टाइज जहां पर रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी. ओके, तो दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि HWC, they will provide primary health care covering the maternal and the child health services, screening for the non-communicable disease, free essential drugs, and follow up for the hospitalization cases. These centers will also conduct yoga sessions to promote the wellness. तो आयुष्मान भारत का 2 लेवल है, एक है प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा, और दूसरा जो डिवीजन है वो है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. यहां पे इसका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इट इज द लार्जेस्ट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम which provides health protection cover of rupees 5 lakh per family per year to the poor and the vulnerable families for hospitalization expenses towards the treatment of serious illness. तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. सेकेंड, दिस इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये देता है क्या, हेल्थ प्रोटेक्शन देता है. कितने का, रुपीज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू द पुअर एंड द वल्नरेबल फैमिलीज, मतलब ये सभी के लिए नहीं है. और किस लिए देता है, फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इलनेस. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन रांची इन 2018 और डेट वहां पे दिया हुआ है मैगजीन पे 23 सितंबर. थ्रू PMJAY गवर्नमेंट का एम यही है कि टू ऑफर द फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन to the beneficiaries through a system of demand-led healthcare initiative to support for hospitalization expenses. मतलब गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तभी देगा जब आप एक्सपेंसेस करोगे. तो दिस इज टोटली डिमांड लेड. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट दिस इज अ कैशलेस ट्रांजैक्शन. ओके, आयुष्मान भारत मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो कि लुक टू सॉल्व द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स थ्रू ए कंटिन्यूअम केयर अप्रोच, यानी कि ये कंटिन्यूअस रहेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द बेसिक थिंग्स इज दैट दिस विल प्रोवाइड यू द कैशलेस एक्सपेंसेस फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन विच यू हैव इनकर्ड. तो नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस आयुष्मान भारत स्कीम. सो पहला जो इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम के बारे में बोला जाएगा वो है कि इंक्लूजन ऑफ द रूरल बेनिफिशियरीज, जिसका कोई पक्का हाउस नहीं है, नो एडल्ट और मेल मेंबर बिटवीन 16 to 59 ईयर्स ऑफ एज इन दैट फैमिली, मेंबर्स जो कि फैमिली मेंबर्स डिसेबल्ड है फिजिकली, उसको भी दिया जाएगा, और लैंडलेस हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरिया जो कि कैजुअल लेबर में मतलब उसका इनकम आता है. ओके, सो दीज आर द 4 मेन कैटेगरीज in which the facilities under the Ayushman Bharat will be provided. And in case of urban, the unorganized sector laborers, they are included in the Ayushman Bharat scheme. It is an umbrella and it is a complementary support to the state run health insurance. So as we know that health जो की है वो एक state subject है as per the constitution. So health देखा जाएगा, मतलब उसका जो steps लिया जाएगा, schemes वगैरह वो किया जाएगा states government के द्वारा. तो ये आयुष्मान भारत और जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. तो यहां पे देखिए देयर इज नो सच बर्डन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट दैट दे नीड टू फॉलो आयुष्मान भारत स्कीम
if they have already an insurance scheme, so government of India ने बोला है कि there is flexibility to the state governments on which way they will implement this Ayushman Bharat scheme. So there is no chance of conflict, and there is no cap on the family size and the age of the members. It is portable throughout the whole country. मतलब किसी एक एलिजिबल बेनिफिशियरी अगर वेस्ट बंगाल से होगा तो वो उस आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के वो तमिलनाडु में भी उसका लाभ उठा सकता है. सो दिस एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन विजिट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री एंड रिसीव कैशलेस ट्रीटमेंट. ऑल द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आर कवर्ड फ्रॉम द डे वन. मतलब आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो भी लोग आएगा उससे पहले उसके पास जो डिजीजेस होगा ना, दे विल ऑल बी कवर्ड अंडर द स्कीम. द सिलेक्शन ऑफ द फैमिलीज विल बी डन in a bottom up approach through the SECC data 2011. ACCC का मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. तो उस डेटा के अनुसार जो भारत का 40% बिलो पॉवर्टी लेवल और उससे मतलब मार्जिनल फैमिलीज है उसको लिया जाएगा फॉर द इंक्लूजन इन द आयुष्मान भारत स्कीम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां पे देखिए ये कैसे इंप्लीमेंट होगा. इट इज अ फ्लेक्सिबल स्कीम एंड स्टेट कैन हैव द फ्लेक्सिबिलिटी to choose the model they decide to promote Ayushman Bharat. States can implement the scheme in the following manner. Insurance mode एक होता है जहां पे स्टेट एक इंश्योरर को अपॉइंट करेगा एक डिफाइंड प्रीमियम रेट के ऊपर, ओके. और एक होगा ट्रस्ट मोड जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी कैन पे द क्लेम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स डायरेक्टली. एंड देयर इज अ मिक्स्ड मोड, मतलब in some cases there will be the penetration for the insurance sector, and in some cases the state government agencies will take the center stage. Okay. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि फाइनेंस कैसे किया जाएगा. Look, for every government scheme, two things are very important. First of all, how is it will be implemented and who will be the beneficiaries, and the second important part is that how will it be financed. Okay. तो ये एक centrally sponsored scheme है and it will be fully funded from the consolidated fund of India. So this is very very important because this is a centrally sponsored scheme. This will be completely funded from the consolidated fund of India, and budget allocated is received from the government of India as recurring grant in aid. मतलब state government जो help government of India की तरफ से लेगा वो grant in aid की तरह दिया जाएगा, और वो जो एक्सपेंसेस होगा दैट विल बी इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड इन द रिसेंट बजट ऑफ 2019-20 रुपीज 6,400 करोड़ इज अलोकेटेड टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. और यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न ऑफ फंडिंग होगा वो कैसा होगा. फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 90% बिहार की एक जगह सेंटर की तरफ से और 10% देना होगा स्टेट्स को. यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज जिसके पास लेजिस्लेशन होगा, और जो स्टेट्स तो उसके पास तो लेजिस्लेशन होगा ही, तो वहां पे सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 60% और स्टेट का जो रहेगा वो रहेगा 40%. और जहां पे मतलब यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर इज नो लेजिस्लेशन, सो देयर विल बी 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दीज आर मोस्टली all same for the centrally sponsored scheme. So this is very important. This part is not true only for this particular sector, rather this is true for all the centrally sponsored scheme. So this is important for your static point of view. और यहाँ पे देखिए कंक्लूशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव बात करना होगा और वो भी थोड़ा कंसर्न्स लेके. मतलब दिस न्यू स्कीम्स एंड एलोकेशंस दे रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि उसको हेल्थ सेक्टर में कुछ करना है, इसीलिए ऐसा स्कीम ला रहा है. तो नॉट जस्ट इंप्रूविंग द हेल्थ आउटकम्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिंग अ लार्ज इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इकोसिस्टम. ये लार्ज होगा, इक्विटेबल होगा, अफोर्डेबल होगा और एक्सेसिबल. तो इन चार वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको ठीक से समझना होगा. इक्विटेबल मतलब सभी का पार्टिसिपेशन होगा, अफोर्डेबल मतलब सभी उसको मतलब जो बेनिफिशियरीज है वो अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सेसिबल मतलब सभी उसको उसका लाभ उठा सकता है. ओके, सो हाई क्वालिटी सर्विस, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज अ पॉलिसी शिफ्ट इन द गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट जो उसका पहले का रोल था जो परचेज करता था मतलब प्रोवाइड करता था, नाउ दे आर टेकिंग द रोल ऑफ ए परचेजर. सो फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर दे आर transforming themselves into a service purchaser. This
is a boost to the private sector participation and healthcare, and it is ensuring the vision of 100% coverage in the healthcare throughout the country, geographically as well as demographically. Its success or failure is totally a thing of future. However, it is a giant leap towards the healthcare inclusion in India. तो यही सभी लिखा हुआ है योजना मैगजीन का 2019 अगस्त इशू में हेल्थ केयर के बारे में. तो आप पढ़िए और यहां से आप एक क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो मतलब मेंस में आने वाला है, और फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू for the development and growth of a country. Anyway, thank you and have a wonderful time.